Where is, did I close किया शायद. Okay, so can you tell me what you understand by means what all you know about SQL or structured databases? सर SQL मतलब जो हमारा टेबल फॉर्मेट में जो डेटा है वो, और नो SQL में मतलब जो इमेज फॉर्मेट में वगैरह जो डेटा है उससे हम नो SQL बोल सकते हैं. इमेज नहीं, टेक्स्ट फॉर्मेट, ये टेक्स्ट फाइल्स में जो होते हैं ना, टेक्स्ट फाइल्स एंड हाँ. So basically tables, SQL is mostly connected to your relational database model. Yes. So this is one way of storing the database. So SQL is always connected to relational database model. And what is a relational database model? It consists of tables, it consists of rows and columns. At a very, so you need to so every database will consist of this components. Database will contain tables will contain rows and columns. So ये एक so you have to specify or design these tables using using some commands or using some UI tools, and and you may apply you may apply some normalization to it. So have you like done normalization? Do you understand, or how is it? Actually, sir, I have some basic idea about normalization. There are first normalization, second normalization, third normalization, and fourth normalization are there. 4 type of normalizations are there. Okay, so to arrange the table in well structure, we are using normalization technique. Okay, do you understand the importance of normalization? No, sir. Like, what is the advantage of doing normalization? Like, did you do normalization problems anytime? Like, solved any normalization? No, sir. Oh, you didn't do normalization problems? Like, converted into 1NF, converted into 2NF? No. Oh, no, sir. Okay. So this is something definitely they have missed out. So this much part at least you understand, no? That database is there, the database tables is there. This you have been repeatedly doing, and this database will always rely on some machine which is called a server, or more specifically, it is a database server. Okay. So this is what this is. Do you understand this much as per the diagram? Whatever I mentioned. Yes, sir. Okay. So this was done in the earlier days. Okay, so what used to happen is this entire database used to lie on one machine. Now can you tell me how much usually what is the machines, what is your storage size that you can think a machine can have? Or how much storage size have you seen maximum?
So sir, it can 1 TB. 1 TB. Let's say for us is 1 TB. Okay. So ultimately, what is happening is this database is nothing but some file. This is actually stored. Even if you say MySQL dot, but if you say SQL Server and say, let's say your database name is my database, it will be some file name as LDF or my database. If it's some kind of a backup or something, it will be some SDF. Okay. So you can never actually read these files. Actually, these files are stored internally in the binary format. Only the software can open it and read it, and you can definitely, whenever you want to do a backup or restore, so do you understand what is a backup and restore? So backup means creating backup. Yes. A duplicate copy, a duplicate copy of the file. So what usually happens in backup and restore is you make the duplicate copy of these files actually. So so there will be and you give the backup name something in this backup.ldf. So if you take a backup of the file on, let's say today's let's say 25th September. So if you do not want to lose the database, if your data, you may want to take a backup every 1 hour or maybe every so this will be like FDF, and you will give a date and time also, so that you have the date and time. So this will be the date and time will be, let's say 26. Tomorrow's backup will be created using this timestamp. So this is your and whenever, let's say, you lose the data on any particular day, you just take this backup and replace the file of this file, and you get the old database. So so far backup restored any so backup is a process of taking a duplicate copy and making a duplicate copy and storing it somewhere, and restore is basically taking a backup copy and converting it back into the original format. So you have to overwrite the database, because you have lost the data for some reason, your machine electricity went off and the data was lost, or there was some earthquake or something disaster was there because a fire was there, your database was lost. So always backups and restore has to be done. Any questions on so far about whatever I have said? No sir. Okay. So definitely whenever you're doing a backup and restore, you have to keep in mind your locations. If it is same, then there is a problem. If you take a backup of the machine on the same machine, and if the machine, something happens to the machine, you lose the backup also. So you may have not one backup, but you may have the same backup stored in 2 different locations also. This is also you can as a strategy, as a database strategy, you can do. So some other locations, this is on location 1 and this is on location 2. So usually this kind of strategy is called a disaster recovery strategy. So these terms you should it's called the DR strategy. What is your DR strategy? So if you're into databases, then definitely this strategies you should be aware about: backup, restore, DR, and all this. So that is so the important thing what I wanted to tell you, this is ultimately some file. Now the question is how big the file can, how big that file can get. Can it go beyond the size of the hard disk? This is like any other file on the hard disk, no? Can it be greater than the size of hard disk? So we can use hard disk or we can use cloud.
Yeah, I mean that is a strategy in case if you are you can use cloud also, but in the sense if it is cloud, then you should have a way to scale it, you know, so scaling up you say, or you can say this is because if you in the cloud definitely you can do vertical scaling. So like you can assign more storage and increase the size of the disk, and that way the database will keep on growing. But your normal databases usually will have a limit, you know, even though your disk size is big, let's say they may have a limit on how much it can grow. So one is your design. You need to design before you use, and secondly it you know, it can how much it can vertically grow. If it is in the cloud, then it may vertically grow. So do you understand what is the vertical growth? Which means there is a table over here, or there is a database consisting of tables. Now there are 10 rows. Now you can vertically grow this database, you know, onto another 2 million rows. So first you have 1 million rows, and now it is the 1 million rows are full. So so you had allocated only 1 TB, so 1 TB is gone. So you can allocate, if a vertical scaling would mean I can increase this 1 TB to another into 2 TB, you know, 1 more TB, and so that I can scale it. So this is a vertical growth. It looks like a building. Okay, so this is called vertical scaling. Scale up. And scale down would mean whenever, let's say, the database size is not required, you scale down. So scale up and scale down means that, and this is what vertical scaling means. Now if there is 1 million rows in this table, and let's say you're searching for some data like, you know, you're doing select statement, then how much time will it take to fetch the record? You think time taken to find a record or records in a larger data set, larger database is you know, how much is the time taken? Do you think time will increase or time will decrease as the number of you know, as the database keeps on increasing? The query time will increase or query time will decrease? Time will decrease. If there are more records in the table, then it will take more time to search, no? Let's say there are 1 million rows, okay? So and in that 1 million rows you are searching for your name. Now suddenly there are 2 million rows and you are searching for your name. How much time will it take? Less time or will it take more time to search 2 million rows? It will take more time. Correct. So again you see there is a problem in the relational database model, that it is not very efficient, you know, at all times. So time to search can take very long time. So this is all the problems, and that's why SQL databases is not exactly suited for big data. This, you know, if there is a big data problem which is in 1 terabyte, whether you are searching 1 terabyte thing and everything, then relational database model can start crying, in the sense it will start not be able to function in a more efficient manner the way you want it. So so when to use your structured database, when to use your big data is mostly you know, in the zone of you know, where there is a huge database, and you know, if the data and it also can manage semi-structured, unstructured, and structured, not structured, you can say mostly it is for semi-structured and unstructured data processing. You know, whenever there is a big data, then you know, this kind of relational database models can be a problem. So far, do you understand you know, the problems in relational database models? Yes. So now there is a new concept which is called, you know, so what the thing is, this so one I said is you can make a duplicate copy, you know, and you can do you know, one is you can do so distributed
not parallel database would mean you're making a copy on another database. Okay, so whenever you want to if you know some people will access the see, both the databases are the same copies, let's say example. Okay, so let's say this is D1 and this is copy of D1. So every time there is a row added over here, let's say somebody added a row called Prajakta, okay, then it is very important. So should the row be updated in the other table also, in case if somebody is querying the other table? Yes, sir. Right. So this process is called synchronization. Okay. So you have to always keep the database in sync. Copy in sync, so that if somebody is accessing this database, it should be same like accessing the first database. If somebody is searching for Prajakta and they find it here, then they should find it here also. Correct? This is a very obvious thing, that if the both databases are same. And why do I have two parallel databases? Maybe I have parallel databases because I want it to be load balanced or something, you know, that just I'm giving you an example of how we can strategize. You know, maybe 10,000 people can access this database and 10,000 people can access this database, you know, so that your time to process a query can be very less. So that is what is, you can say, a parallel databases, and you have to you know, be consistent. The data has to be consistent. So whenever somebody is saying consistency, which means if this database is in state A, which is means state A means it's a database with record Prajakta, then the other database also should be in the same state with the record being Prajakta. Then only we can say data is consistent. Okay. Any questions on this? Hello. 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 हाँ, इवेंचुअली कंसिस्टेंट डेटाबेस मॉडल मल्टीपल डेटाबेस पे ऑपरेट होता है कि सिंगल मल्टीपल डेटाबेस? ओके, तो जो भी, हाँ, ओके, सो दिस इज अबाउट व्हेनेवर देयर इज मल्टीपल डेटाबेस कॉपीज, तो उसके बारे में बात होता है. तो बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर में एप्लीकेबल होता है. बराबर है? यस सर. ये यूजुअली सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात हो रहा है बेसिकली. Yes. So eventually consistent database model is basically if it is a synchronized technique where data if read on one database may not be available on second database immediately, but it will eventually be available, and so hence it will be eventually be consistent. Okay. आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब सर अगर हम लोग मल्टीपल मतलब कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम सेव भी होगा और डेटा में परफेक्शन भी होगा और इवेंचुअली कंसिस्टेंट का
का मतलब क्या है? मतलब वो इमीडिएटली सेम टू सेम रहेगा हमेशा, कि जब भी मैं रीड करता हूँ, सिलेक्ट क्वेरी फायर करता हूँ मल्टीपल डेटाबेसेस में, हमेशा मुझे सेम रिजल्ट आएगा कि डिफरेंट रिजल्ट आएगा एक इवेंचुअली कंसिस्टेंट डेटाबेस मॉडल में? सर मतलब डिफरेंट रिजल्ट आएगा। वेरी गुड। तो बेसिकली डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकता है, ये स्टार्टिंग में ही बोला जाता है आपको। अगर आपका डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डेटाबेस कंसिस्टेंट रहना है, तो मेक श्योर योर डेटाबेस इज कंसिस्टेंट डेटाबेस मॉडल, नॉट इवेंचुअली कंसिस्टेंट मॉडल डेटाबेस मॉडल। ये बहुत वर्ड्स है ना, कॉमनली यूज होगा, तो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक डेटाबेस, अब मैंने बोला साइज का एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो अभी क्या करते हैं आजकल उन लोग ना ही, एक तो मैंने आपको बोला कि आप मल्टीपल कॉपीज बनाओ, रीड रेप्लिका बनाओ, बराबर है। ये एक टेक्निक हो सकता है कि आपको आपने रीड रेप्लिका, इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरीज, मतलब क्वेरी को बांट दिया है, एक जगह इंसर्ट डिलीट अपडेट रन हो रहा है, दूसरा जगह सिलेक्ट रन हो रहा है। तो सिलेक्ट ज़्यादा लोग रन करते हैं कंपेयर टू इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। ओके, तो जब भी कोई सिलेक्ट करता है तो रीड इज फास्टर देन, सो ये और एक चीज़ है, रीड मतलब सिलेक्ट ऑपरेशन, मे बी फास्टर तो नहीं बोल सकते हो, बट इट इज लिटिल स्लोअर देन इंसर्ट। ये डिपेंड करता है कि आपका टेक्निक कैसे, बट यूजुअली अगर आप नॉर्मल 10,000 रोज लोगे तो इंसर्ट जल्दी हो जाएगा उसमें कंपेयर टू सिलेक्ट, क्योंकि सिलेक्ट आपको पूरा रिकॉर्ड स्कैन करना पड़ता है, इंसर्ट आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड ऐड करना पड़ता है। सो द नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट यू नीड टू स्कैन, सो इट मे बी 1000 ओवर ईयर। आपको सर्च करने के लिए 1000 रोज सर्च करना पड़ेगा ना, बट इंसर्ट करने के लिए मे बी सिर्फ 2 रोज ऐड करना पड़ेगा या 1 रो ऐड करना पड़ेगा, या डिलीट रन कर रहे हो तो आपको डिलीट, यू कैन मे बी डिलीट 100, बट अपडेट ऑल्सो कैन अप्लाई ऑन मल्टीपल rows. So comparatively there are more rows to process when in a select query compared to insert, delete and update. So read replicas is usually makes sense when I don't want to read, write, or whenever I just want to, let's say, create a report, I want to do data analysis. क्या data analysis के लिए insert, delete, update important है क्या हमारे लिए? नहीं ना, हमारे लिए। हेलो, यस सर। तो बेसिकली हेलो, हाँ, डेटा एनालिसिस के लिए सिलेक्ट क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर लुकिंग एट रीड रेप्लिकास मोस्टली फॉर डेटा एनालिसिस। ये सब टेक्निक के अलावा भी एक टेबल बहुत ह्यूज हो सकता है। तो जब एक टेबल ह्यूज हो सकता है तो इसको भी आप रोज एंड कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हो। मतलब अगर एक टेबल में सोच ले, देर आर 1000 रोज, सो इधर 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, एंड इट गोज डाउन टिल लेट्स से 1000। और लेट्स से इट गोज अप टू 10,000 or 1 million. So this table is consisting, so and then let's say you are having multiple columns in this. तो इधर आपने लिखा है प्राजक्ता, जेम्स, ऐसे करके पूरा रोज है इधर। तो ये आपका एक टेबल है, लेकिन ये कितना, ये बहुत बड़ा टेबल हो गया। ये टेबल में अगर आप सर्च करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो टेबल को, और सर्च पैरेलली सर्च करो। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ये टास्क, ये टेबल को अलग अलग ये क्या बोलते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड कैसे कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल लेट्स से
एक अपने की डिफाइन किया है थाने, एंड लेट्स से आप थाने प्रोजेक्ट is staying in थाने एंड जेम्स is staying in बोरिवली। तो आप इसको एक पर्टिकुलर की को लेके, जैसे लोकेशन को लेके डेटा को डिवाइड कर सकते हो। मतलब इसको ये डेटा एक थाने का डेटा सेट हो सकता है। So this will contain all the थाने records. दूसरा टेबल में बोरिवली का रिकॉर्ड्स होगा, जो भी लोग बोरिवली में रहते हैं उनका रिकॉर्ड्स अलग सा डेटा सेट होगा। और अगर कल को एक नया लोकेशन आ गया, सोच लो बोईसर आ गया, तो बोईसर इधर ऐड करेंगे और एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। एक मिनट, अच्छा रहा। Yes. So basically what you're doing is you're not storing all the data in one contiguous manner or in one table. You are dividing, you're storing the table as maybe different partitions, you can say. So this is called a partition of a table. Okay. So is this term something new to you, or No, so partition means we are making different parts. Partition is basically a table only, okay? But it is Yes. it is not a full table. You cannot say one. If you want to know Yes. all the records of a particular table, you have to read all the partitions. So this can be partition Yes. number 1, और इसका की क्या है? The key here is key is equal to थाने। मतलब अगर किसी ने बोला मुझे थाने का रिकॉर्ड चाहिए, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम माई टेबल। सोचो ये टेबल का नाम माई टेबल है, इधर ये जो टेबल का नाम है माई टेबल है। सो यू आर सेइंग यू फायरिंग नाउ यू आर एक्चुअली फायरिंग अ क्वेरी ऑन अ टेबल वेयर लोकेशन is equal to Thane. So what internally will happen is, database, if you have created a partition, then it will be very intelligent to know that you this is stored, it will know that this is stored in a particular partition, and it will instead of searching all the rows, it will only search for rows in Thane partition. So the time taken to retrieve a record or search for any record will be much faster. So is this understood why partitions are useful? Yes, sir. What is partition, you understood? Yes, sir. So now that you have understood partitions, partitions are also now earlier example I gave you where the entire database was replicated, okay? Yes. But now you don't only have your entire database is divided into partitions, partition sets. Yes. So whatever theory applies for database duplication, it will distributed database also applies for partitions also. So partitions now will also work with partition you can say multiple multiple servers or multiple databases. So the replica copies may not exist only on one machine, but may exist on many machines. So you may have one machine over here, second machine over here, third machine over here, fourth machine over here, and fifth machine over here. And this all machines will be connected to each other.
So you can say that this is a cluster of machines. Okay, when you say cluster, the moment you say cluster, for me this is only one machine, but actually this one machine is consisting of 5 machines behind the scene. So if I say a select query star from my table, it will so you can say this machine, I am giving some name, I am giving some logical name, my logical database. This logical database is actually distributed on 5 different boxes behind the scene. So Thane partition will be stored on this box. Then so let's say Borivali partition, so let's say this is Thane, partition is here, and maybe on the same box Borivali is stored. But since that server has got a limited size, you cannot store all the data there. So it is better that if Boiser data is coming, you store it on some other box. So Boiser is here. So partitions can be stored on a cluster. A cluster is a set of multiple machines viewed as one logical unit or one logical database or one logical server. So for you, a cluster means one machine. For you, this is one database. For you, this partitions, though it is stored on separate servers, you are actually firing a single query over here. So you can say use my logical database and you are saying select star from my table where location is equal to Thane. So this entire thing is one cluster, you can say. So are you understanding what is a cluster, what is partition? Yes sir. Okay. तो मैं जब क्वेरी फायर करता हूँ, मैं तो बहुत सिंपल वे में क्वेरी फायर करता हूँ, बट इंटरनली क्या हो रहा है कि ये प्रोसेसिंग फास्टर करने के लिए मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनटू मल्टीपल सर्वर्स, इनटू मल्टीपल पार्टीशंस. लेकिन और एक टेक्निक ये भी होता है कि सोचो ये मशीन को कुछ हो गया, ये जो बोइसर वाले मशीन को है, ये इसको समथिंग हैपेंड, लाइक आग लग गया या यू आर नॉट एबल टू एक्सेस फॉर सम रीजन, या डेटा करप्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया. तो ऐसे क्या हो सकता है कि ये डेटाबेस यू कैन लूज. अगर ये डेटाबेस खो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसीलिए हम वही सेम टेक्निक यूज करते हैं जो पैरेलल डेटाबेसेस के लिए हमने स्टार्टिंग में यूज किया था. इसका एक कॉपी लेके मैं दूसरे मशीन पे भी मैं डालूंगा. तो मैं क्या करूंगा, इसका एक और एक कॉपी में लेके दूसरे बॉक्स पे डालूंगा. तो इसका एडवांटेज ये कि अगर 10 लोग बोइसर का रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट सर्च कर रहे हैं, तो या तो ये बॉक्स नंबर 2 से रिकॉर्ड मिल सकता है, या तो बॉक्स नंबर 1 से भी मिल सकता है. तो 10 लोग इधर जाएंगे, 10 लोग इधर जाएंगे, तो फास्टर तो हम ज़्यादा लोगों को क्वेरी जल्दी आंसर कर सकते हैं. तो इधर हम बोइसर रख सकते हैं. फिर थाने का रिकॉर्ड हम इधर दूसरे बॉक्स पे इधर रख सकते हैं, चाहे तो मे बी इधर रख सकते हैं बोइसर और थाने का रिकॉर्ड्स.
और इधर मैं बोरीवली का कॉपी रख सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो डेटा अवेलेबिलिटी का इशू हो जाएगा। तो अभी मैंने सेकेंड वर्ड यूज किया है अवेलेबिलिटी। पहले ये नहीं था ना, मतलब पहले ये पहले ये डुप्लीकेट कॉपीज नहीं थे। बॉयसर, सोच लो बॉयसर का रिकॉर्ड मैंने डाला नहीं इधर फॉर एग्जांपल। अगर ये मशीन को कुछ हो जाता है, मशीन नंबर 2 को, तो बॉयसर का भी रिकॉर्ड चला जाएगा। और बॉयसर का क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाया है आपने, तो वो डेटा नहीं मिलेगा। तो उसको अवेलेबिलिटी इशू बोल सकते हो कि डेटा इज नॉट अवेलेबल। तो अवेलेबिलिटी करने के लिए आपको हमेशा डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहिए कि डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा हमेशा अवेलेबल हो। जितना आपका डुप्लीकेट कॉपी होगा उतना डेटा अवेलेबल इजीली होगा। और सेकंड चीज क्या मेंटेन करना पड़ेगा आपको, डेटा कंसिस्टेंसी। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया, अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, पार्टीशन। अगर आप डेटा ये जो आपने पार्टीशन किया है, अभी तो जैसे पूरा रोज भी है, लेकिन आप ये एक एक कॉलम को भी आप पार्टीशन कर सकते हो। ओके। मतलब सिर्फ लोकेशन का कॉलम अगर आप पार्टीशन करते हो, सिर्फ लोकेशन का, और इधर डालते हो, फिर दूसरा कॉलम आप निकाल के इधर रखते हो, फिर तीसरा आप सोच लो इधर ये इधर भी रखते हो, और इसका और एक कॉपी आप इधर भी रखते हो। तो अगर अभी कोई सर्च कर रहा है लोकेशन एंड की, या प्राइमरी की, या प्राइमरी की कॉलम प्लस लोकेशन, तो वो ये पार्टीशन में जा सकता है। You don't require all the columns to make a search. If you are making a search over here, then primary key plus name, then you can go over here. So this is you can say this is a column level partitions, or this is a vertical partition, you can say. अगर आप रोज पूरे के पूरे रोज डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे आपने फर्स्ट 10 रोज लेके इधर डाल दिया, नेक्स्ट 10 रोज लेके, या नेक्स्ट 1000 रोज, या नेक्स्ट 10,000 रोज इधर डाल दिया, ये भी आप कर सकते हो। तो इसको आप शार्डिंग बोलोगे। हॉरिजॉन्टल distribution of rows across multiple servers या copies is called sharding। और अगर vertical distribution of columns कर रहे हो तो vertical distribution of columns across multiple servers copies is called partitions। तो थोड़ा स्लाइड डिफरेंस है, लेकिन डेटाबेस में शार्डिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोज बोल सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया है, कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं समझा है,
क्लस्टर क्या है, पार्टीशन क्या है, डेटा अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, डेटाबेस स्ट्रक्चर डेटाबेस का मतलब क्या है, टेबल्स रोज एंड कॉलम्स क्या है, कुछ भी नहीं समझा। ओके मेरा पॉइंट आपको ये बोलना था कि ये क्यों मैंने बताया है, मुझे ये बोलना था कि आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सेम वे में ऑपरेट नहीं करता है जो आपने कॉलेज में पढ़ा था। अभी ज़माना आगे बढ़ चुका है, डेटाबेस मॉडल तो है ही है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट एक थोड़ा टफ टास्क हो गया है। तो डेटाबेस मैनेज करने के लिए ये सब टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसका नॉलेज भी होना चाहिए, इवन इफ इट इज़ ओनली एसक्यूएल ओनली। अगर आप सीक्वल में भी हो तो ये सब चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हैवी कॉन्सेप्ट था आज के दिन। तो मुझे कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा अवेलेबिलिटी एंड डेटा कंसिस्टेंसी? डेटा अवेलेबिलिटी में मतलब सर जो भी डेटा है, जो भी डेटा है टेबल में, मतलब जो डेटाबेस जो टेबल का हम लोग ने पार्टीशन किया था उसमें जो डेटा अवेलेबल है, मतलब कैसे डेटा अवेलेबल है उसको डेटा अवेलेबिलिटी बोलते हैं। आप कैसे याद रख सकते हो ना इसे कि आप किसी को कभी आपने सुना है विल यू बी अवेलेबल, तो आप वो क्या बोलते हो, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कभी कभी आपको कोई फोन करके बोलता है प्रोजेक्ट विल यू बी अवेलेबल ऑन दिस डेट, तो प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, यस आई विल बी अवेलेबल। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस। अभी आप अगर नहीं अवेलेबल हो तो क्या करते हो फिर उस केस में? आप एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हो, आप किसी और को रिप्लेस करते हो, बोलते हो क्या मेरा काम आप आज के दिन संभालोगे क्या? आप अपने फ्रेंड साइली को बोलते हो साइली मेरा काम संभाल लो, आपको ये चीज करना है। तो इसमें आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया है? डेटा अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया अवेलेबिलिटी का। तो डेटा अवेलेबिलिटी का सॉल्व डेटाबेस में कैसे होता है कि आप एक डुप्लीकेट कॉपी बनाओ, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो दूसरा एक उसका डुप्लीकेट कॉपी हमेशा अवेलेबल होगा। आपका क्वेरी में आपका कुछ फर्क नहीं आएगा, आपका क्वेरी सेम रहेगा, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम माय टेबल वेयर लोकेशन इक्वल टू थाने, बट द डेटाबेस सर्वर या डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है वो इंटेलिजेंट होगा कि डेटा अवेलेबिलिटी इज हाई। डेटा अवेलेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया? यस सर। अभी डेटा कंसिस्टेंसी क्या है समझा मुझे? डेटा कंसिस्टेंसी डेटा कंसिस्टेंसी मतलब डेटा इज सेम, मतलब डेटा यस, नो मैटर वेयर अगर मैं सोचो आपके पास आप एक ऑफिस में काम करते हो, सोचो आप बोईसर में काम करते हो, हाँ, उधर आपका कोई आता है बोलता है आपको ये मैंने रजिस्टर किया था, आप डेटाबेस में देखोगे क्या मेरा रजिस्ट्री है क्या? तो आप बोलोगे हाँ डेटाबेस तो है। फिर आपका एक ब्रांच है बोरिवली में, तो आपका वही डेटाबेस उधर भी यूज़ हो रहा है बोरिवली में, लेकिन फिर मैं उधर जाता हूँ बोरिवली में और बोलता हूँ क्या मैंने रजिस्टर किया है और क्या मेरा आप कंफर्म कर सकते हो क्या? तो बोरिवली वाले ने बोला नहीं, इधर तो नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन, तो इसका मतलब है डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। मतलब दो अलग जगह से आप सेम डेटा रीड करते हो तो डेटा सेम दिखना चाहिए, इसका अगर नहीं है तो डेटा इज इधर नॉट कंसिस्टेंट और इट विल इवेंचुअली बी कंसिस्टेंट, दोनों में से एक हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? यस यस सर।
आपने और एक वर्ड यूज किया था स्केलेबिलिटी, स्केल अप स्केल डाउन। तो डेटाबेस स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मुझे समझा। हमने स्केल अप वर्ड यूज किया था, स्केल डाउन यूज किया था, वर्टिकल स्केलिंग बोला था। मतलब फिर जो टेबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रोज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम लोग शेडिंग बोलते हैं, शार्डिंग। एंड जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉलम्स का, उसको पार्टीशन बोलते हैं। हाँ, बट मेरा क्वेश्चन डेटा स्केलेबिलिटी पे, मतलब स्केलेबिलिटी एक रूलर की तरह होता है ना। रूलर एक 12 सेंटीमीटर का रूलर हो सकता है, 15 सेंटीमीटर का रूलर स्केल हो सकता है, 1 मीटर का टेप हो सकता है। तो डेटा स्केलेबिलिटी साइज से संबंधित है, मतलब इट इज रिलेटेड टू साइज, कि डेटाबेस कितना साइज झेल सकता है। 1 TB 2 TB, हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि पहले 1 TB है, मैं अपने स्केल क्लाउड में जाके इसको 2 TB बना दिया, तो डेटा साइज इंक्रीज हो गया। अभी मैं ज़्यादा डेटा एक ही सर्वर पे डाल सकता हूँ, है ना। डेटा अवेलेबिलिटी और डेटा कंसिस्टेंसी में शायद आप 2 मशीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेटा स्केलेबिलिटी में आप एक मशीन भी यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल मशीन्स भी यूज़ कर सकते हो। एक ही अगर हार्ड डिस्क का स्पेस है तो एक ही सर्वर पे आप उस डेटाबेस का साइज इंक्रीज कर सकते हो। तो मुझे समझाओगे डेटा स्केलेबिलिटी क्या समझा आपको? मतलब फिर अगर कोई भी डेटा है, जैसे कि 1 TB का डेटा है, तो उसको हम लोग को मतलब साइज बढ़ाना है, यूज कर सकते, तो उसको स्केलेबिलिटी बोल सकते हो, उसको स्केल आप बोलोगे। या वर्टिकल स्केलिंग का प्रॉब्लम बोल सकते हो। तो एक बिल्डिंग की तरह है ना, कि 10 माला है मेरे पास, अभी मुझे 20 माला करना है, तो उसको आपका बिल्डिंग स्केल करना पड़ेगा ना आपको, उसको स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं। ऐसे आपको ये जो भी अभी ये कॉन्सेप्ट समझा है, उसका रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस समझ में आता है आज के दिन बहुत सारा डेटा है। हाँ सर। और ये क्यों ये सब टेक्निक्स आ गए हैं, आपको सिखाया नहीं गया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स, ये भी कॉन्सेप्ट्स में आते हैं एक्चुअली, स्पेशली बिग डेटा में तो डेफिनेटली आते हैं। आजकल हम छोटा डेटाबेस के साथ बहुत कम काम करते हैं ना, छोटा कंपनीज में भी छोटा डेटाबेस के साथ काम करते हैं, बट इफ देयर इज अ बिग डेटा प्रॉब्लम देन इवेंचुअली ये डेटा बढ़ के बहुत डेटा हो जाएगा। तो किसी को तो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। So I don't want to move forward now with more theory. Okay. तो थोड़ा heavy हो